right? Muskan, if I asked you, what do you do when you're asked to face anything, any challenge in your life? How do you face it? What do you do? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, first of अ- all, आपको अगर बोला जाए आज कि मुस्कान आप स्टेज पे चढ़ जाइए और एक प्रेजेंटेशन दीजिए yes, ma'am. विदाउट एनी प्रिपरेशन, हाउ विल यू फेस दैट चैलेंज? क्या करेंगी आप? Ma'am, आप I'll give स्टेज my पे best. चढ़ेंगे? आप Yes, चढ़ेंगी ना ma'am. स्टेज पे? और फिर आप Definitely. कुछ बोलने की कोशिश करेंगी, Yes, ma'am. चाहे आप प्रिपेयर्ड हो चाहे नॉट प्रिपेयर्ड हो, आप कुछ ना कुछ तो Yes, जरूर बोलेंगी। yes, ma'am. बोलेगी ना? अच्छा, Yes, मैं जब चढ़ती थी ना स्टेज पे आपकी एज पे, सबसे पहले तो मुझे अपने कान में ना अपनी हार्ट बीट सुनाई देती थी, जोर जोर से, तक 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 तक, it would go, and I could not hear what I said for the first 5 minutes. I could never hear what I said for the first 5 minutes. I had severe stage fright. मुझे इतना ज्यादा डर लगता था स्टेज पे चढ़ने के लिए कि मेरे को 5 मिनट तक कुछ भी नहीं सुनाई देता था। वो जो फ्लैश कार्ड भी तैयार किए हुए होते थे वो भी दिखाई नहीं देते थे, राइट? और मैं पता नहीं क्या बोलती थी वो पहले 5 मिनट में, पर लोगों को मैं हंसा देती थी। तो जब मैं हंसा देती थी ना तो मैं खुद, मेरी टेंशन कम हो जाती थी। से चलो लोग मेरे साथ हंस रहे हैं, मेरे साथ हंस रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे हैं, यू नो, राइट? इट्स अ ह्यूज थिंग। एटलीस्ट कोई आलू टमाटर नहीं फेंक रहा है मेरे ऊपर, या ये नहीं कह रहा है उतरो स्टेज से, क्या बकवास कर रही हो, यू नो। सो that itself, when I got that thing from the audience, I got that response from the audience that they're enjoying listening to me, it was a huge boost for me. And then my heart would slow down. I could hear things, I could see things, I could suddenly, it was like a miracle, and I would be able to face the audience, right? I would say that's how we deal with anxiety. That was anxiety for me, right? Getting onto the stage, facing a huge crowd. So what did I think when I got onto the stage? And this was a trick that somebody taught me. They said, सोचो कि सारे के सारे जो बैठे हैं ना ऑडियंस में, वो सारे के सारे बनी रैबिट्स हैं। As soon as you think everybody is sitting out there is a bunny rabbit, things, just get diffused on their own. The tension gets diffused, the anxiety gets diffused, and you start thinking ये कौन से type का bunny rabbit है, इसके कान लंबे हैं, उसके कान छोटे हैं, stuff like that. So what I did was distract myself from what it is that I'm facing. So Kritika, you've come from Jammu and Kashmir. I give a lot of talks to people in paper planes in Kashmir. I don't know if you've heard of the group on Insta. And in fact, I had a girl from Kashmir working for me as my Insta person. And she's now gone to Flame, right? Her name was Ayat. I think she's a big, huge influencer on Insta also. तो वो मुझे बताती थी थोड़ा बहुत about life in Kashmir, right? And the kids that I spoke to also told me a little bit about life in Kashmir. And it is very different from the life in Delhi. First of all, Delhi is more big. It's huge. Secondly, all the students who will come to Miranda House will come from different parts of India, not only from Delhi. Majority will be from Delhi. Those are the day skis, as they're called. But quite a few will be from the hostel and will be from all over India, right? It's okay. Everybody is finding their feet. Everybody is in the same storm, if not in the same boat, as they call it. सबके सब, यहाँ पे मैं सबको बोलूंगी ना अनम्यूट करो, और मैं सबसे पूछूंगी कितने लोगों को एंजाइटी हो रही है 2 साल के बाद कॉलेज जाने की. I will get 100% response. Everybody is in the same storm. Now, do you want to be in the yacht or do you want to be in the canoe is the question.
आप पार लगेंगी हर केस में। अगर आप यॉट पे होंगी तो आप तेजी से पार लगेंगी, आप कनू में होंगी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। डिफरेंस बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यहाँ सब डरे हुए हैं, यहाँ सबके सब सोच रहे हैं कि भैया मैं कैसे पार लगूंगा। तो बेस्ट तरीका है सबसे बोल दो सीधा साधा कि मैं कैसे पार लगूं यार, तू बता दे तू कैसे पार लग रही है। What are you doing to get across the stream or get away from the storm? You will be so surprised and so happy to realize nobody has a clue. सबके सब उसी चीज में फंसे हुए हैं, पर कोई भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है कि मैं फंसा हुआ हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई टू बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीनिंग जितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल हो सकते हो। अपने फियर्स, अपने डाउट्स, अपनी एंजाइटीज को लेके उतना ही आपकी एंजाइटी कम होगी, क्योंकि आप रियलाइज करोगे कि बाकी सब भी मखौटे पहन के अपने आप को छुपा रहे थे। राइट? Everybody else was putting on a show of being very smart, very independent, very clued in when nobody has a clue. Right? So I'm from Lady Shri Ram College and I did economics honors out there. And fortunately or unfortunately, मेरे से जो seniors थे वो सारे मेरे स्कूल के थे, तो सबको पता था कि मैं फर्स्ट ईयर हूँ। And at that time, everybody used to be called, who was in the first year, used to be called Facha. So we were ragged like anything. I was ragged like anything because everybody knew that I'm a Facha. नहीं तो कई दफा आप pretend करते हो ना हम second year के, हम third year के हैं, because nobody knows you, right? So you can get away with it. I could never get away with it because they all knew कि ये अभी नहीं आई है। तो कई दफा तो मैं देख के पीछे भाग जाती थी कि भैया अब पकड़े जाना है और मेरी रैगिंग होनी है। और कई दफा मैं पकड़ी जाती थी और मेरी रैगिंग होती थी। अब आप पूछोगे किस तरह की रैगिंग होती थी, और मैं आपको बताऊंगी कि आई थिंक आई वाज इन कॉलेज अबाउट 30 years बैक, राइट? एंड माय रैगिंग यूज्ड टू बी सो क्यूट, you know. There was this movie called Mr. India which was released at that time. अनिल कपूर की पिक्चर थी, राइट? और उसमें एक कैरेक्टर था मोगैम्बो, एंड मोगैम्बो हमेशा कहता रहता था मोगैम्बो बहुत खुश हुआ, राइट? हाँ, एंड एवरीबडी हैड टू से हेल मोगैम्बो टू हिम, राइट? तो हम जैसे ही किसी सीनियर को देखे हमें ऐसे ही सलूट करके बोलना पड़ता था हेल मोगैम्बो, चाहे हम उसको जानते थे या नहीं जानते थे या कुछ था। फच्चा, if you see a senior, all you have to do is stand like that and say hail Mogambo, right? दूसरा वो गाना बड़ा चला था, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, राइट? तो हमें उसके ऊपर बड़ा सेंशुअस सा श्री देवी की तरह डांस करना पड़ता था, ठीक है? और दूसरी चीज ये थी, एलएसआर में सिर्फ 2 आदमी थे। कौन 2 आदमी? एक जो कैंटीन चलाता था और एक जो बुक्स बेचता था, ठीक है? all of us had to go and propose to both of them. और कैसे प्रपोज करना होता था कि we had to buy a rose from our house. घर से लेके आना रोज, रेड रोज, येलो रोज, जो भी रोज लेके आना। और पैपी, अभी तक मुझे उसका नाम याद है, जो हमारा बुक शॉप वाला ओनर था, उसको प्रपोज करना है, और जो कैंटीन वाला है उसको प्रपोज करना है। शिट, वी वर लाइक इन डीप शिट। हम कहे यार कहाँ फंस गए। हमने कभी जिंदगी में, मैं तो ऑल गर्ल्स स्कूल से आई थी, उसके बाद ऑल गर्ल्स कॉलेज, मैंने कहा ये क्या मुसीबत है यार, जाके किसी को प्रपोज करना है? क्यों? मुझे उससे शादी भी नहीं करनी है, मैं क्यों उसको जाके प्रपोज करूंगी? बट नो, यू हैव टू गो एंड प्रपोज। सो दीज वर ऑल वेज टू मेक अस मोर कंफर्टेबल। पैपी न्यू कि कोई रोज पकड़ के आया है तो मेरे को प्रपोज करने आया है। तो पैपी, बिफोर वी कुड इवन से अ वर्ड, यूज्ड टू से हाँ हाँ मैं शादी करूंगा। तो हमें प्रपोज ही नहीं करना पड़ता था,
you know. The canteen guy was worse, you know. He used to always make sure कि हम पूरा proposal उसको करें कि please आप मेरे से शादी करेंगे, मैं आपसे बहुत बुरी तरह से प्यार करती हूँ and stuff like that, and we had to give him the rose. He used to be enjoying himself thoroughly because 25-30 लड़कियां रोज आके उसको propose करती थी, right? क्योंकि दो ही तो आदमी थे पूरे कैंपस में. I don't know तुम्हारे कैंपस में कितने आदमी हैं, but हमारे कैंपस में सिर्फ 2 थे. And they used to be regularly proposed for the whole of the first year. मतलब उनको 20-25 रोज मिलते थे. And वो बेचारे रोज बोलते थे हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा. मतलब 25 लड़कियों से वो शादी करते थे रोज. Right? So the point is that all these rituals that have been put into place, like ragging and very harmless ragging, has a purpose to break the ice, right? Later on, of course, ragging became really ugly, but during our time we got to know our seniors really well. हाँ, एक और चीज हम करते थे, हमें बोलते थे कि जनगण मन गाओ with 21 gun salute, right? So it used to be janagana tha man vadhinayaka tha, you know, like that, and we had to keep doing tha in the middle, you know, and if we didn't complete 21 gun salute, we had to start singing it again, you know. तो हम किसी दिन पूरा दिन खड़े होके ना जनगण मन ही गा रहे होते थे जब तक कि 21 तोपे नहीं बजेंगी, you know. हम लोग को इतने अच्छे से रट गया कि अब ये 3 वर्ड्स के बाद तोप बजानी है, you know, नहीं तो 21 पूरी नहीं होंगी. Right? So it was great fun also, you know. It was like we used to get very anxious when we saw the seniors initially, but later on they became our best friends, you know. They would guide us, they would tell us how to go to the library, what to study, what is the reference book, कब reference book के लिए खड़ा होना होता है. वो हमें किताबें भी दे देते थे, वो बोलते थे ऐसे पढ़ना है, you know. And हम बड़ा सिर खाते थे अपने seniors का, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, you know. And they would really literally hold our hands throughout the process. And what was the process? The process was of ragging, you know. That was the way that they made friends with us, right? So खड़े हो जाते थे एकदम से, चल सीनियर खड़ा हुआ है ना, तो चल बच्चे खड़े हो जा. अच्छा अब जो सीनियर आया तो तुम खड़े क्यों नहीं हुए, you know. I mean, all that kind of thing. And it was so sweet because they all just wanted to make friends with us the same way as we wanted to get to know the seniors, right? Having said that, you know, some people did face a lot of anxiety even during our time, you know, and they used to feel कि यार ये क्या है यार, रोज खड़ा कर देते हैं, किस तोपे की सलामी, what is this nonsense, you know. And they would really crib. But if you cribbed, let me tell you, you would not make friends. They would be checking how amenable you are to be ragged, how sportingly you take the ragging, right? How you learn to deal with difficult situations, right? And how good is your sense of humor. क्योंकि कभी कभी तो हम इतनी जोर जोर से हंसने लग जाते थे कि 21 तोपे पूरी नहीं हुई कि, you know, they would also start laughing with us. And they say, अच्छा ठीक है चले जाओ, you know, it's okay, कोई जरूरत नहीं है complete करने की, you know. So these were ways or rituals in checking what kind of a person are you, right? So many times what happens is that we are all anxious. We are all wanting to face situations in a better manner than what maybe we are capable of. Hence the anxiety comes in, right? The anxiety only comes in when you have performance pressure, as it's called, right? How are you going to perform? For example, if you're going to have an exam, you will get anxious. Exam stress होएगा ही होएगा. क्यों? क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं. अच्छा, हमारे जमाने में अच्छे मार्क्स फर्स्ट डिवीजन होते थे, राइट? अब मुझे पता नहीं क्या होते हैं. तो क्या होता था कि कंपटीशन तो होता था, बट वी हैड वेरी फ्रेंडली कंपटीशन. हम कभी मिलिशियस नहीं हुए. हमने कभी किसी से किताबें मतलब छुपाई नहीं, बल्कि हम एक दूसरे को बताते रहते थे कि यार वो रेफरेंस बुक वहां मिल रही है,
you know, हम नोट्स भी कॉपी करते थे एक दूसरे के लिए, हम शेयर भी करते थे वो नोट्स, because we all realize that everybody has a different capability, right? Even if आपके पास सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे ना, आप फिर भी शायद उतना अच्छा ना कर पाओ जितना अच्छा टॉपर करेगा, क्योंकि उसका तरीका ऑफ लर्निंग दैट नोट्स, उसका तरीका ऑफ राइटिंग द आंसर्स डाउन will be very different from the way that you will do it. So my one advice would be, never try to hide notes or try to, you know, keep things from your fellow people, because it doesn't work. You will not make friends, first of all. And let me tell you, it's very important to make friends to reduce anxiety, because the friend will also tell you, यार मुझे भी नहीं आता है, चल इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है ना? और या तो वो फ्रेंड बोलेगा चल मुझे आता है, मैं तेरे को समझाता हूँ, यू नो। हम लोग ऐसे करते थे. इफ आई अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट वेरी वेल, I would tell the same thing. I would make 5 people sit in front and tell the concept to them, so that I became better at it and they understood it, right? And इसमें ना बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा. एक तो हम किसी और की मदद कर रहे होते थे, दूसरा अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता था, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी को सिखाओगे तो यू विल गेट बेटर एट इट. एवरी टाइम यू टीच समबडी, यू बिकम बेटर एट इट. फोटोकॉपी की मशीन होती थी, 35 पैसे लगते थे फोटोकॉपी पे एक चीज के. तो हमारे पास पैसे कहाँ होते थे? हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे जब हम कॉलेज में थे. तो हम कहते थे यार तू फोटोकॉपी करा ले, हैं तू 1 हफ्ता रख ले, तू पढ़ लेना, फिर मुझे दे देना. सो दैट वन फोटोकॉपी यूज्ड टू रोटेट अमंग ऑल ऑफ अस. और किसी के पास पैसे नहीं होते थे. अब तो मुझे पता नहीं क्या सीन है, बट हम लोग तो चाय भी बड़ी मुश्किल से पी रहे होते थे, ठीक है? पर हमें डर नहीं था चीजों का. हमने ये वर्ड ही नहीं सुना था एंजाइटी. ये किस चिड़िया का नाम है, यू नो? अगर तुम मेरे को मेरे यूथ में पूछते ना कि सवीरा आर यू एंग्शियस, आई वुड से व्हाट इज दैट, यू नो? We just didn't know the meaning of it, because maybe we had much less exposure than what you had. Maybe we didn't have the internet, we didn't have so many channels playing on the TV telling us, oh my god, you've got to be anxious. If you're not anxious, it's not worth it to live, you know? So first of all, I would tell you, stop watching all these negative serials, you know, all these places where people tell you indirectly that you're not worth it, right? All these glamorous girls, वो क्या कोरियन सीरियल मैं भी देखती हूँ कभी कभी, जिसमें उनकी इतनी सी वेस्ट होती है, इतनी सी लिटरली ना, मेरे को लगता है ये खाते भी होंगे. I literally feel, do they eat or do they, you know, swallow it and then go and throw it up? God knows. That's another sign of anxiety, by the way, throwing up, right? Throwing up everything that you've eaten because you want to look slim, trim, and amazingly sexy. Hello, we are all sexy in our own way. Just looking good doesn't make you sexy. I think the sexiest thing is if you have a good brain, if you're able to have a good conversation, if you're able to explain what the world means to you, what it means to you to be alive. हाँ, आप लोग anxious हैं to go back, but weren't you anxious when it wasn't opening? You were, right? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, और टैया मेरे बाप का doesn't work. It doesn't work. It's good to be back. It's great to be back. All you have to do is you have to change your mindset. Instead of saying, अरे यार मैं तो जम्मू कश्मीर में कितने मजे से रह रही थी, है कृतिका, मम्मी खाना पकाती थी, बहन कुछ लाके दे देती थी, मजे में लाइफ चल रही थी, मजा में लाइफ, मजा ना लाइफ. अरे मजा ना लाइफ इधर भी होगा, पर तुम्हारे को सोचना पड़ेगा कि होगा, राइट?
अगर तुम ये सोचोगी कि यार शिट मैं कहाँ आके फंस गई, ये पोल्यूटेड सी दिल्ली, ये लोग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, पता नहीं क्या लैंग्वेज बात करते हैं, है लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है, द स्लैंग इज आल्सो डिफरेंट, you know, and then you're like totally lost, and what do you feel? I don't fit in. So the anxiety is that you don't fit in. Hello girls, the good news is you're not supposed to fit in. If you fit in, you're just like everybody else. So what I say is that when everybody thinks the same way, nobody's thinking very much. एक बंदे ने सोच लिया और 50 लोग उसके पीछे हर्ड की तरह चल पड़े. Oh God, this social media is fantastic, you know. If I put Snapchats and if I do, what do you call them? Reels. And if I put myself on Instagram, I'm the next best happening thing. Believe you me, you're not. You're not. इसको हम हिंदी में भेड़ चाल कहते हैं और इंग्लिश में herd mentality. There's no need to be part of the crowd. I never wanted to be part of the crowd. I wanted to stand out. And I was mostly outstanding outside the class. Right? It's okay. So what? I learned a lot by standing outside also. I did. देखो लाइफ में ना इतनी सीरियसली नहीं लेने का. इतनी सीरियसली लोगे ना तो लाइफ पूरी की पूरी चली जाएगी और आप सोचोगे शिट यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं. I had no fun. I only studied and studied and studied and got marks and got marks and got marks, and my parents were very happy. What about you? Were you happy studying only all the time? No. I was part of at least 20 project club, ये club, वो club, सारे clubs join कर लिए थे मैंने LSR में जाके. मैंने कहा देखे तो सही है होता क्या है इन clubs में. और फिर धीरे धीरे जो पसंद नहीं आए वो छोड़ दिए. तो in the end I was left with about 5-7 clubs that I was a member of. You must do extracurricular activities. You must. They are so important to build your leadership skills. They're so important to build your interpersonal skills. They're so important to build your organizational skills. हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता था जो अब भी होता है. It's called Tarang. I don't know what your festival is called. What's it called, Swati? The festival that is held in Miranda House. Ma'am, Tempest. Tempest, yes. Oh, वही तो था. हाँ, वही नाम था. हम लोग नॉर्थ कैंपस भी आते थे. सारे फेस्टिवल्स अटेंड करते थे हम. एक हमारे टाइम पे बड़ा फेमस सा म्यूजिक ग्रुप था. क्या नाम था उसका? अभी भी है वो ग्रुप. I forgotten. Parivartan or something like that. I don't know. Parikrama or something like that. I don't know. It was a very well-known group. और मुझे अभी तक याद है कि हम लड़कियों को ना हमारे पेरेंट्स रात को अलाउ नहीं करते थे कि नॉर्थ कैंपस जाओ. तो उन्होंने निर्वाणा भी एक ग्रुप था. हाँ, उन्होंने आफ्टरनून में 3 बजे से 6 बजे तक एक रॉक कॉन्सर्ट रखा था. Have you ever heard of a rock concert in the afternoon? They kept it in the afternoon so that all the girls from South campus could come and attend it. And we had such a blast. मैं कहती हूँ ये दिन आपके कभी फिर से नहीं आएंगे. हमने ऐसी क्रेजी चीजें की हैं इन दिनों में कि अभी देख देख के ना और सोच सोच के ना इतना मजा आता है कि ओह यार क्या मजा किया था हमने. मारुति कार उस वक्त नई नई आई थी. हम 16 लोग भराते थे उस गाड़ी में. 16 लोग. पीछे से डिक्की भी खोल देते थे और पता नहीं कैसे घुस जाते थे. अभी तक याद. मतलब ऑफ कोर्स वी वर मच स्लिमर but still 16 of us fitting in that car was a feat. मतलब हम लोग निरूला जाते थे, डिफेंस कॉलोनी निरूला. तो वो गाड़ी खुलती थी तो एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, मतलब लोग निकले ही जा रहे हैं वो छोटी सी गाड़ी में से. And that was also great fun. हम लोग सारे पूल इन करके पैसे एक हॉट चॉकलेट फज खरीदते थे और हम बड़ा खुश होते थे कि हमें एक बाइट मिली उस चॉकलेट फज में से. You have to find joy in small things, very tiny things, in very tiny compartments.
Joy will not come to you only when you achieve such a big award. पता नहीं आजकल क्या होड़ लग रखी है सबको, भैया जब तक कि मेरे को अवार्ड नहीं मिलता है, nobody recognizes me, I don't exist. What is this existential crisis? It's nonsense. It's really nonsense. देखिए, Earth has existed for 4 billion years. उसकी टाइमलाइन में आपके 100 साल are just a blip, come and gone. तो वो 100 साल में मैक्सिमम 100 साल आई एम टॉकिंग अबाउट, कुछ तो डिफरेंस करो इस अर्थ पे। और रोते पिटते रह जाओगे तो क्या डिफरेंस करोगे? हाय मैम, पहले तो खोल नहीं रहा था कॉलेज, हाय मैम अब तो खुल गया कॉलेज, हाय मैम अब तो फिर बंद हो गया कॉलेज, हाय मैम अरे फिर खुल गया कॉलेज, अब क्या करें? भैया खुल गया है तो खुश करो, खुश हो, खुशियां मनाओ, पटाखे फोड़ो, शुक्र है खुला है। नहीं, अब आपको मिलेगा चांस टू इंटरैक्ट, अब आपको मिलेगा चांस टू मीट योर टीचर्स, अब आपको मिलेगा चांस टू गेट मेंटर्स। Why aren't you looking at the positive side? Why are you only looking at the negative side? क्या होगा? हद से हद क्या हो जाएगा? मार देंगे तुम्हें? नहीं ना। When you reduce it to the least possible denominator, everything becomes very clear. हद से हद क्या हो जाएगा? रो पिट के कश्मीर वापस चली जाओगी कृतिका? क्या हो जाएगा? What's the worst possible scenario? Nothing. रो पिट के यही मिरांडा हाउस में पढ़ रही होगी, है ना? करना तो है पूरा ना, नहीं करना? You can unmute. Yes, ma'am, I will do that. है ना? नहीं भैया पड़ेगा। 3 साल तो पूरे करने हैं, बाकी मुझे नहीं पता। Yes, और ये ma'am. 3 साल हमारे सबसे हैपनिंग ईयर्स होते थे। I was in economics honors and I was part of an organization called International Association of Students in Economics and Management, ISEC. और सारे के सारे लोग कहते थे दिस इज द पार्टी ग्रुप, कुछ काम नहीं करते हैं, बस पार्टी कर रहे होते हैं। But you won't believe I learned so many skills being part of that organization, which are still useful for me now, today. I learned so much. We used to go and we used to hold a mock stock exchange in IIT, Delhi. Right? हमने actually scripts बनाए थे, हमने actually चीजें की थी. You know, there's so much. It's like the sky is the limit. What you can do with your time out here. हाँ, बस तो टाइम ही नहीं था सोचने का कि हम एंग्शियस है। नहीं, सुबह से लेकर रात तक जो दौड़ लगी रहती थी, उसी में सारा टाइम निकल जाता था। ये सब ना मेरे को लगता है ना अमीरों के चोंचले हैं। आई एम वेरी एंग्शियस, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी, ओ माय गॉड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू माय लाइफ? What is going to happen to your life? You're going to die in the end. Everybody who's born will die one day. है कि नहीं? These are the two absolute truths. You were born and you will die. अब इसके बीच में क्या करामात दिखा सकते हो? That is what life is about. कोई आप में से बन जाएगा जूलॉजिस्ट, कोई आप में से चला जाएगा जूज में, कोई चला जाएगा पेट्स के साथ, कोई चला जाएगा वाइल्ड लाइफ में, कोई चला जाएगा। So exciting. Wow. You won't believe, I have friends from LSR who have become wildlife photographers. After doing economics honors, I have become a counselor. I had never in my wildest dream thought कि economics honors के बाद मैं counselor बनूंगी. Right? I have friends who joined Morgan Stanley, became the best of the best, and then left everything and became a Sivananda yoga instructor. कुछ पता होता है लाइफ का? मतलब she was on the topmost level, GM level.
सब छोड़ छाड़ के गोवा में शिवानंदा योगा सिखा रही है ऑटिस्टिक बच्चों को। कोई पता नहीं होता क्या होना है लाइफ में। बट जितना भी जियो, खुल के जियो, डर डर के भी जीना, कोई जीना है लल्लू? क्या जीना है डर के जीना? एंग्शियस हूं मैं, डिप्रेस्ड हूं, मेरा साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा? भैया तुम्हारा भी वही होगा जो बाकी सबका होगा। मेरी डॉटर है छोटी वाली, शी इज जॉइंड अशोका। वो भी अभी मेरे ख्याल से 1 महीने बाद जाएगी हॉस्टल में, हाँ, लिबरल आर्ट्स करने। पहले तो रोती रहती थी, मेरा तो 12th का ना फेयरवेल नहीं हुआ, मेरा तो 12th का ना फेयरवेल नहीं हुआ, मैंने तो साड़ी नहीं पहनी, मैं तो सबको बाय बाय नहीं करा। हेलो, हु इज वेटिंग फॉर यू टू से बाय बाय यार? हो गया ना ऑनलाइन, साड़ी पहन ली ना। उसके बाद मैंने दिवाली के लिए भी उसको साड़ी ले दी, मैंने कहा पहन, जितनी मर्जी साड़ी पहननी। भैया जब कुछ नहीं कर सकते हो तो फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। This was an unusual happening. This happens in every 100 years that you get a pandemic or an epidemic of this proportion. You know, after 10 years, you'll be telling people, oh, you know what? I was in college at the time that COVID happened. And you know how we dealt with it? हमने टेक्नोलॉजी का क्या यूज किया था? We all got onto something called Zoom. ये अपने बच्चों को सुना रहे होगे तुम ना, और बच्चे कहेंगे व्हाट इज दिस Zoom? हाँ मॉम, व्हाट इज दिस Zoom? या वो बच्चे पूछ रहे होंगे व्हाट, यू डिडंट गो टू कॉलेज, हाउ सैड फॉर यू। क्या है? लुक एट द बिगर पिक्चर, व्हाई आर यू लुकिंग एट द स्मॉल पिक्चर के 2 साल? अरे मैं यंगर वन कम्स एंड शी सेज मेरी तो जवानी ही निकली जा रही है। आई फाइंड दैट द फनीएस्ट डायलॉग। तो भैया आई जवानी, चली भी गई 2 साल के अंदर, हम तो अभी तक जवान है कि नहीं? किसी एंगल से मेरे को लगता है कि मैं ओल्ड हूं? मैं तो अपने आप को बहुत जवान समझती हूँ अभी भी। मेरी तो जवानी अभी तक चल रही है। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, तुम तो सारे बूढ़े हो गए लगते हो मेरे को अभी से ही। इट्स ऑल इन द माइंड, it's not in the figure, it's not in the how good or bad you look, or you know what you, it's all in the mind. It's a mindset. This anxiety is also all in the mind. हाय मेरा क्या होगा, हाय तौबा मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, वो टीचर मिलेगी वो कैसी होगी, हाय वो जो लड़कियां मिलेगी वो कितनी गंदी सी होंगी, हाय वो जो मेरे को बात भी नहीं करेंगी, कैसी लैंग्वेज में बात कर रही होती है, स्मोक कर रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है। ऐसे तो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे जमाने में भी ऐसी थी बहनजी टाइप, BTM we used to call them, बहनजी turned modern। हाँ, हाय तौबा, हमारी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी, ऐसी लड़कियों के साथ घूमती हैं जो पीती भी हैं और स्मोक भी करती हैं। Not that I ever did it, but I never found anything wrong with it. Right? It's okay. It's their life. They want to fuko it in the cigarette, let them fuko it. They want to fuko it in drugs, let them do it. It's their free choice. They want to say, oh, I'm so anxious, you know, I cannot get into the class without smoking a cigarette. Smoke a cigarette. I can get into the class without smoking anything. I'm very high on life. अब तुम लोग देख लो भैया, तुम कहाँ से अपनी हाई ढूंढोगे। Everybody has to find their high. Only then they can survive. Low term use ही नहीं करनी है। I'm feeling low यार, oh God, I'm feeling so anxious यार, हाय मेरा क्या होगा, हाय तौबा, ये टीचर जो है ना बड़ी बकवास है, मैं तो पास ही नहीं होने वाली इस सब्जेक्ट में। हम सब भी ऐसे ही सोचते थे।
और जो अच्छी टीचर होती थी उसके साथ हम जाके लेक्चर अटेंड करते थे, जो बकवास होती थी हम जाते ही नहीं थे, तो वेस्ट ऑफ टाइम। मत बोलना टीचर को, मैंने कहा था, बट होती है ऐसी। तो हम उसमें अपने आप बैठ के लाइब्रेरी में नोट्स बनाते थे, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट यू ऑल ग्रू अप and stop waiting for a teacher to spoon feed you, which has been done throughout school. No spoon feeding now. You're on your own. I want freedom. I want freedom. When you get freedom, you say, oh shit, now what do I do? अब मैं क्या करूं? ये तो मिल गया जो मैं मांग रही थी, है ना? अब मैं जो मांग रही थी वो मिल गया, मैं उसके साथ करूं क्या? Let me tell you one thing, freedom always comes with duties and responsibilities. It never comes alone. Now, what you do with your freedom, I don't know. I though really enjoyed myself. And within the time that we were given, my mother was very strict. She wanted me back home by 6 o'clock in the evening, no matter what happened, even when I was working. I used to try to explain to her, भैया कभी-कभी overtime रहना पड़ता है, मुझे नहीं पता। मतलब मेरी तो बॉस के साथ लड़ाई हो जाती थी कि मेरी माँ वेट कर रही होगी। ओके, तुम्हारी माँ निराली है, सबकी माँ वेट कर रही होती है, तुम्हारी माँ जरूर 6 बजे वेट कर रही होती है, तो तुम्हें 6 बजे ही निकल के जाना है, तो जाना है तो जाना है। आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो फिर मैं कोई और नौकरी ढूंढ लेती हूँ जो मुझे 6 बजे छुट्टी मिल जाएगी। You see, you have to prioritize your life. You have to prioritize what is important, what is not so important, and what is something that you just don't want to do. You do not have to follow the herd. If everybody is joining the dramatics club, you don't have to join the dramatics club. I don't know dramatics. I don't want to join the dramatics club. I would rather go for wildlife photography because that's my choice. That's what freedom means. That I have the freedom to choose. I have the freedom to decide. अरे मेरी 4 फ्रेंड्स जो है ड्रामेटिक्स क्लब ज्वाइन कर रही है, जरूरी है मुझे ज्वाइन करना है? क्यों? All 4 of them might be good in dramatics. I am not. I don't want to do it. Please. अब ये जो होता है ना कि बाथरूम भी सहेलियों के साथ जाना है, वो प्लीज छोड़ दो. It doesn't pay. I used to be the one who used to never go to the loo with my friends, and they used to all think कि इसका तो दिमाग खराब है. But it never troubled me. चलना यार बाथरूम चलते हैं साथ में, हैं? What a place to go together. Hello? I don't want to go to the loo with you people. I would rather do a project with you people, or I would rather sing a song with you people, or I would rather go and watch a movie with you people. Why do I have to go to the loo with all of you? Never understood this. You know, the stupid habit of let's go to the loo together. और ये especially convent girls में बड़ी होती है. I was from a convent. And the khusar. So everybody doing. So the other person's getting anxious. Are they talking about me? What a bad habit. What a bad habit. What are you trying to prove? She is more friends with me than she is with you. How silly. Grow up, girls. You're all in college now. It's important to help each other. It's important to ask everybody, is your mental health okay? Do you have any issues? Can I help you with it? We call it peer counseling. You can all become peer counselors. I can train some of you to become peer counselors also. You know, just to ask somebody, are you okay? You know, when, okay, if you've seen the movie 3 Idiots, have you guys seen the movie 3 Idiots? Yeah? What is, or who is Amir Khan? He's the peer counselor. He's telling them, why the hell do you want to become an engineer when you are such a good wildlife photographer?
Why are you so scared of taking exams to the other guy? It's just an engineering college. Enjoy it. The man comes first because he enjoys himself, studying a subject that he likes, that makes sense to him. Once the subject is your passion and it makes sense to you, there is no room for anxiety. There is no room for depression. ये anxiety or depression तो, first of all, I don't know who contacted me. I think Alpana ma'am contacted me. She said, let's call managing stress and anxiety. I said, why? Why would somebody want to manage something like stress and anxiety? I changed the topic to cope with stress and anxiety. क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी होनी ही नहीं चाहिए. जब होएगी नहीं तो उसको मैनेज क्या करना है? और अगर है तो उसको कोप करना है. You have to find tools. The best way to cope with depression is to watch comedy movies. I know you'll think it's very frivolous, but it isn't. Even fake laughter produces pheromones in your body and makes you feel good. वो recorded laughter होता है ना shows में, Kapil Sharma show and this thing. I watch a lot of Kapil Sharma, by the way. I think it's a huge stress buster. Huge stress buster. Because non-stop nonsense चल रहा होता है सारा. ठीक है ना, दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? सारा टाइम क्यों you have to watch intellectual shows? What are you trying to prove? That I'm an intellectual? Everybody knows. If you're an intellectual, everybody knows, and if you're not, that also everybody knows. So who are you trying to prove? What are you trying to prove? So the way to deal with depression, watch a comedy movie, one. Second, first of all, find out what is clinical depression. A lot of people think that they are depressed, but they're not really depressed. They're just unhappy or they're just sad. There's a difference. People who are depressed cannot function normally. They might not even comb their hair or take a bath or be able to do the normal things that people are able to do very easily. Depression is that, not sadness. There's a difference between sadness and depression. You could be sad that you have to leave your parents and go to Miranda House. But that doesn't mean you're depressed. Please, people use this term as though, it's aloo pyaz. It's not. Depression is a very serious clinical disease. It requires sometimes medication. And there should be no stigma attached to being depressed. A lot of people go through it. And it literally, जैसे मुन्ना भाई कहते हैं ना, ये brain में कुछ लोचा होता है. There is a chemical issue in your brain. It might be brought on by circumstances, or it might be just something that your body physiologically feels. Then you can get disconnected with the real world. And you actually keep on crying for no reason whatsoever. When you cry for a reason, it's not depression. So learn to differentiate what exactly is depression, firstly. Before saying, yeah, I'm feeling very depressed, and you're actually just sad. There's a huge difference between depression and sadness. First of all, read what is depression. And वो नहीं करो please, वो जो क्या कहते हैं, वो जो अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं just by reading about depression. वो मत करना. फिर तुम्हारी टीचर ना मेरे को लेके डंडा मारेगी. Why did you tell them to read about depression? Right? What is anxiety? Anxiety is just because you're feeling pressurized because of a certain situation you're in.
You're just anxious because you are not sure of the outcome or the result. Right? You might be anxious because you had to change your place, like Kritika. You might be anxious because you have to move from online to offline. You might be anxious because your friend didn't talk to you. तो क्या हो गया यार, उसने बात नहीं की. Your boyfriend didn't talk to you. Oh my God, even bigger anxiety. मेरे को ना कोई भी फ्लावर्स नहीं मिले वैलेंटाइंस डे पे. सच एन एंशियस एग्जिस्टेंस ना. मेरे को तो कोई भी प्यार नहीं करता है. जरूरी तो नहीं है ना, ये तो सब के सब चोचले बनाए गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से. बर्थडे केक भी उसके ऊपर कैंडल लगाना इंडियन कस्टम नहीं है. वो भी एंजाइटी देता है लोगों को. 50 कैंडल लग गई मेरे केक के ऊपर. मतलब मैं 50 साल का हो गया. पहले जमाने में ना लोगों से पूछो ना, हाउ ओल्ड आर यू, दे डिडंट इवन नो देयर बर्थडे. माय नानी यूज्ड टू से, वो ना सावन में ना उस दिन बड़ी बारिश हुई थी ना, तब मैं पैदा हुई थी. हेलो, बारिश तो सब टाइम होती रहती है, कब आप पैदा हुए थे? She didn't even know when she was born. चलो जी, she herself decided कि चलो जी मेरा बर्थडे ना जब मॉनसून होता है ना उसमें किसी भी अच्छे दिन पे मना लेना. And this is just 2 generations back. My mother never cut a birthday cake till she became, I think, 60 plus. होता ही नहीं था. पहले जमाने में मिठाई बनती थी और सबको अच्छा खाना मिलता था घर में और हो गया जी बर्थडे. ये सब हमने ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से क्रिएट की है एंजाइटीज अपने लिए. वो क्या कहते हैं वो कार्डिशंस. हाँ, माय डॉटर जस्ट स्टार्टेड वाचिंग क्या लाइफ विद द कार्डिशंस और समथिंग. आई सेड माय गॉड व्हाट अ फेक लाइफ दीस पीपल लीड यार, जस्ट फॉर द टीवी. एंड सारे बच्चे उसको गॉबल अप कर रहे हैं. दे आर कंज्यूमिंग इट एंड थिंकिंग हाँ यार हमारी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए. और करोड़ों अरबों रुपए हैं उनके पास, रो पिट रहे होते हैं फॉर नो राइम और रीजन. वेले बैठे हैं वहां. चलो जी पैसे बनाते हैं एक टीवी शो बना के, और हम गधे लोग उसको कंज्यूम कर करके बोलते हैं हाँ वो यार बेचारे की लाइफ में कितना स्ट्रेस है, बेचारी की लाइफ में कितना टेंशन है. खाक स्ट्रेस और टेंशन है. करोड़ों अरबों पति है, क्या स्ट्रेस और टेंशन है? कोई नहीं. इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शोफर है, मेड है, बच्चों को देखने के लिए मेड है, हस्बैंड है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है? मेरे को तो बड़ा स्ट्रेस है, मुझे तो बड़ा टेंशन है, मुझे तो बड़ी एंजाइटी है, मुझे तो बड़ा डिप्रेशन है. ये सब अमीरों के चोचले होते हैं. It does not exist if you do not give it any kind of fuel. ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस होता है, ओवरथिंकिंग से एंजाइटी होती है. मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ 10 दिन आगे, कल कैसे होगा, परसों कैसे होगा, तरसों कैसे होगा, अच्छा उसके बाद भी क्या होगा. ओह माय गॉड, मेरे को तो बड़ा स्ट्रेस है. मैंने क्या किया? आई क्रिएटेड इट फॉर माई सेल्फ. When it does not exist in the reality, it does not exist. Half the scenarios, more than half the scenarios from which we get anxiety or stress have been created by us, self-created. Have you heard of self-sabotaging? Self-sabotage. हमें पता है कि हम ये कर सकते हैं, पर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर करके वो काम करते ही नहीं है. और फिर वो लास्ट डेट खड़ी आती है और फिर हम स्ट्रेस. ओह माय गॉड, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. अब तो सिर्फ 48 आवर्स रह गए और मिले थे 4 महीने करने के लिए. बाकी 3.5 महीने, पौने 4 महीने पता नहीं क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि करूं. Don't do things like this to yourself. Do not self-create anxiety and depression. They are proper, जिनको कहते हैं बीमारियां हैं. डिप्रेशन तो बीमारी है. क्लिनिकल डिप्रेशन is a sickness which is treated with medication. Anxiety is a stress disorder. 80% of the time it's self-created.
20%, there really are people who are very anxious. Some people can't even get onto the bus because they are very anxious. That I would say and categorize it as anxiety, not offline se online ho gaya. What nonsense. Online se offline ho gaya. So what? अच्छा हुआ ना हुआ, नहीं जाना है कॉलेज, नहीं बनाने हैं फ्रेंड्स, नहीं रहना है मस्ती में, हाँ क्या? I need you to unmute and tell me if you don't want to do it. You don't want to do it? I was literally waiting to go back to college and I'm very happy right now. चलो एक तो हमारे पास हैप्पी जना है, देविका. और कौन है हैप्पी टू बी बैक? Malvika, can't hear you properly. There's some disturbance. Yes, Vedanti is very Really happy. looking forward to going back. Yeah, Malvika, I'm sure. I'm sure half or more than half of you are really wanting to get out from your homes where you've been stuck and your parents who've been irritating the hell out of you. I'm one of those irritating parents, so I know. My daughter says, कब खुलेगा यार, मैं कब जाऊंगी? है? क्या जरूरत है यार घर में बैठने की? This is unnatural. This is not natural. Go have fun. These are the years where you will create memories. Where was that movie? वो सुशांत सिंह राजपूत की चिच्चोर, है ना? Something like that. हाँ, चिचोरे. Yeah. Chichore. क्या पिक्चर थी यार? मतलब they are having such a great time. है? पहले लूजर से हीरोज बन जाते हैं बिल्कुल, है ना? तुम्हें नहीं करना वो सब, मुझे तो करना होता. I too had great fun in college, in post-graduation, in graduation, and then I studied again at the age of 40. And I had great fun doing that also because I became a counselor. Before that, I was a teacher for 20 years. I used to teach English. I've taught English in MBA colleges and stuff like that. And then I decided I want to change my profession. So I went in and I got NCRT certified. And that's where Alpana ma'am found me. So I went and studied at the age of 40. And then I went ahead at the age of say 45 or something. I went and did a master practitioner in NLP, neuro-linguistic programming, which is basically a way of hypnotizing people with words, right? And now I take talks all over. I took a manifestation talk in Symbiosis. I'm taking a talk with you people on stress and anxiety. I love interacting with young people and finding out what's going on in their minds. You know, I'm an insatiably curious person. I keep asking questions. Why? But why? Kyun? Kyun? Till people get so irritated with me. They say, shut up. Why do you keep asking kyun all the time? I say, because unless and until I ask kyun तुम ऐसे कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? है ना? So don't be shy of asking questions. हम लोग तो अपनी teachers, we used to drive them up the wall. But why? और मैम कहे तुम्हारा तो but why ही नहीं खत्म होता. We had a subject called Indian Economic History. I used to love that subject. I topped the college, the whole university in that subject because I love history somehow. And Indian Economic History, there was this whole chapter on the Indian railways, how it was formed and how everything happened and you know why the Britishers wanted to connect the whole of India and stuff like that. I found it fascinating. But that whole subject, that whole topic, I drove my teacher nuts. No, but why did they build it? But why did they build it from here to here? And why not from there to there?
Or teacher na end mein she was just pulling her hair out and saying, Saveera, please go and read it in the library. You know, you read it first and then you come and ask me, but why? You know. So I was one of those students who always had a question mark on her forehead. I still have a lot of question marks. I love asking people, what did you think about this session? Did you learn something? Are you feeling less anxious? Is depression now something that doesn't bother you after talking to me? I will ask these questions, and I am going to ask it now itself, because I love getting to know. And then after that, we'll do a small little meditation just to give you a tool to deal with anxiety and depression. So I want to know from people here, whoever wants to unmute and tell me what help you got from my session. I like instant feedback, like instant coffee. Right? Swati has been laughing throughout my session. So at least she hasn't been depressed throughout this time. Yeah, yes. Yes, ma'am. I'm constantly smiling for an hour and my cheeks now are paining. I'm literally कि भाई अब बस करो हंसी आ रही है. It was wonderful, ma'am. Actually, the perspectives you shared, just एक सोच and एक thought को change करके कितना आदमी कितना खुश रह सकता है. And this is wonderful. आपका perspective जानकर बहुत अच्छा लगा. The way you take things. And I learned a lot from this session. I learned that ये भेड़ चाल का part नहीं बनना चाहिए. This is something that we all are doing it. Unknowingly or knowingly, we all are part of it. So a lot of things, ma'am. I learned a lot of things. It was wonderful. Great. This session was wonderful. I wish you Instagram में likes don't mean people like you, by the way. I know, ma'am. मैं चलाती भी नहीं हूँ ज़्यादा. नहीं मैं चलाती हूँ अपना. You must have found me on Instagram. It's okay. See, it's okay to use technology. And technology is a great slave, but a very bad master. Don't let it master you. Make it a slave. Use it because it is there to be used. But don't let technology use you. You know, there was this whole WhatsApp article that I read. Article था कि क्या था कि Netflix is competing with sleep. So their aim is to compete with our sleep. जितने आप binge करके देखेंगे, उतना आप सोएंगे कम. And let me tell you, sleep is a huge component in anxiety and depression. If you do not sleep well and your sleep cycle goes for a toss, which most of you do. हाँ, मैं सो के उठ रही होती थी 4 बजे और मेरे बच्चे सोने जा रहे होते थे. Because I believe in getting up really early. And if you look at the sleep cycle, you should sleep 4 hours after your dinner. So your dinner should finish by 7 o'clock latest, and you should be sleeping by 11. And then get up by 4, 5, 6, 7, whatever. But not later than 7. यहाँ तो कोई 9, 9:30 बजे से पहले उठता ही नहीं. क्लास 10:10 पे है तो हम 9:30 उठ जाएंगे. हेलो, हम लोग अपने घर में अपनी माँ की मदद करते थे. हम इंस्टेंट रूम सर्विस नहीं एक्सपेक्ट करते थे. हमारे घर में नौकर नहीं होते थे. हमने झाड़ू पोछे भी लगाए हुए हैं. जिस दिन माई नहीं आती थी बर्तन मांजे हुए हैं, जिस दिन माई नहीं आती थी झाड़ू पोछे लगाए हुए हैं, सब काम किए हुए हैं. And there is no, I tell you, there is dignity in labor. You must do everything in your life. अभी हॉस्टल में जाओगे ना, अपने घर को, अपने कमरे को सफा नहीं रखोगे? रखोगे ना? गंद में रहोगे? गंद में रहोगे तो और क्लटर होएगा दिमाग के अंदर. जितना क्लटर बाहर होता है ना, उससे ज्यादा क्लटर अंदर हो जाता है. It goes into your brain. You must keep everything neat and clean, methodical. It shows a methodical brain. You must chart out your things on time.
attend your lectures. ठीक है, I'm not telling you attend 100%. I know nobody does. But at least attend 80%, because what the teachers are teaching you, you will not get from reading in the books. When we used to have a good teacher, we used to all do well, all of us, you know, because the teacher was so good. We didn't have to do the readings very thoroughly. क्योंकि हमें समझ में आ जाता था. हमारे ज़माने में tutorials होते थे, I don't know if you have it, in which we could ask all our doubts from our teachers, you know, and there used to just be 4 or 5 people in the tutorial, and we were given 4 to 5 chapters to, you know, study. And then after those 4 or 5 chapters, we would sit down and discuss our doubts. And I have taught for so many years, and I have also studied for so many years. And I believe, absolutely firmly believe, कि जब किसी की कोई doubt नहीं होती, मतलब किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की होती. तो हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई करने के बाद आपको डाउट ना हो. इतना इंटेलिजेंट तो कोई भी नहीं है. ठीक है. तो जब मैं एंटर करती थी क्लास में, मैं पूछती थी डू यू हैव एनी डाउट्स, एंड बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था, जैसे कि कर्फ्यू लग गया हो. उसके बाद मैं पूछती थी आई हैव सम डाउट्स दैट यू डोंट हैव डाउट्स. तो आपने क्या पढ़ाई की है? So when you read this, what did you understand from this? जी टोटल ब्लैंक शीट, मतलब भगवान जी ने जैसे बनाया था वैसे सबका फेस हो जाता था. एब्सोल्युटली ब्लैंक, नो आइडिया, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं होता था. है कि नहीं? जब पढ़ोगे तभी तो तुम्हारे पास कोई डाउट होगा, पढ़े बगैर कोई डाउट ही नहीं होगा. तो फट से मैं पकड़ लेती थी. मैं कहती बच्चा यू हैव नॉट स्टडीड. तो एंजाइटी क्यों होती है? जब आप पढ़ते नहीं हो. जब आप सारा काम टाइम से करोगे तो कहाँ से एंजाइटी होगी? एक टाइम टेबल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल होना चाहिए प्ले टाइम का भी. You know, you must schedule in play time. Whenever you make a timetable, me time, play time, going out with friends, hanging out with friends time, though I never understood this phrase hanging out. मतलब आप बाहर जाके टंग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे नहीं समझ में आता. Anyway, तो whatever you do, it should be in your timetable, right? Every single minute, I get up, I brush my teeth, I do my kriyas, I will go into the bathroom, then I will come out, then I will do this. हर एक चीज का एक टाइम स्लॉट बनाओ, कोई एंजाइटी नहीं होने वाली. एंड दिस टाइम टू दिस टाइम, 3 से 6 जो ये टाइम है, इसमें मैं जाके पिक्चर देखती थी, मैटिनी शो. हम लोग जब कॉलेज में थे ना, हम बड़ा बंक मारते थे, और हम मास बंक मारते थे. हम कभी भी अकेले नहीं बंक करते थे. अकेले बंक करेंगे तो मिस करेंगे ना क्लास, सारी की सारी क्लास. और हमारी सारी क्लास कितनी होती थी? 19 पीपल. हम सबको कन्विंस कर देते थे, यार आज ना पढ़ाई नहीं करने का मूड है. तेरा है? हाँ. अरे क्यों है यार, छोड़ परे. और अपन would go and tell the teacher. सब चले गए घर. सब घूम रहे होते थे कॉलेज में, बट हम बोलते थे सब घर चले गए. और उसके बाद हम पकड़ते थे मुद्रिका और जाते थे. चाणक्य सिनेमा होता था. आजकल भी चाणक्य है, बट it's a very different version from what it was. And we would get off at the ring road and walk down to Chanakya cinema, which took a good half an hour. So we had to leave at least 1 hour before the movie scheduled time. उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए. पहले सबको कन्विंस करो, बंक करो, उसके बाद टीचर को कन्विंस करो सबने बंक कर दिया है, तो उसके लिए भी हमको टाइम चाहिए होता था. आधा पौना घंटा तो उसमें जाएगा. तो प्लान बनना शुरू हो जाता था. कोई 12 बजे अगर पिक्चर देखनी होती थी, 3 बजे. उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है. सबको कन्विंस करने में हम बड़े तेज थे. अच्छा, हमारी क्लास में बहुत यूनिटी भी थी, बहुत ज्यादा यूनिटी. वी यूज्ड टू ऑल, अगर किसी एक सेक्शन और 5-6 लड़कियों को जाना होता था कहीं शॉपिंग करने, सरोजनी नगर या पिक्चर देखने, बाकी सब मान जाते थे कि ठीक है यार बंक मारते हैं, और सब अपना अपना प्रोग्राम करने चले जाते थे.
और सबसे पहले बंक करने को तैयार होते थे हॉस्टलर्स, सबसे पहले, बिकॉज वो कहे हम जाके ना अपने हॉस्टल में सोएंगे। उनकी इतनी रैगिंग होती थी, रात भर सोने को नहीं मिलता था उनको। So their primary motive to bunk used to be to go to sleep. So you must schedule in fun time also. It's equally important. क्योंकि ब्रेन को जब तक रेस्ट नहीं दोगे, किसी और चीज में नहीं लगाओगे, वो पढ़ाई पे भी फोकस नहीं करेगा। वो कहते हैं ना क्या, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, मेक्स जिल अ डल गर्ल। You must, and you know, play can also be very structured and it can also be very unstructured. कई दफा लोग मूड नहीं होता था सर्दियों में कि क्लास अटेंड करें, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं 3-4 दिन, हम ना बाय टर्न जाके अटेंड करते थे क्लास। 1 person from 5 of us would go and attend the class, and वो बाकी सबके लिए वो कार्बन पेपर लगा के ना नोट्स बनाता था। तो 3-3, 4-4 कार्बन पेपर होते थे, एक बंदा चला जाता था। और अब मैं ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर प्रॉक्सी देते थे हम एक दूसरे की, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे, हम बाहर निकले, सब खड़े होते थे। सबको मिलनी चाहिए, आपकी क्लास की जैसी क्लास सबको मिलनी चाहिए। वो बाहर खड़ी भी होती थी, बाकी 4 लोग उसी वक्त बट जाते थे कि कार्बन शीट्स, कि यार क्या सिखाया, बोले ये सिखाया, अच्छा बस यही हुआ, चलो ठीक है। किसी किसी दिन सारा दिन धूप में बैठे रहते थे निकम्मे लोग कि भैया बड़ी ठंडा है क्लासरूम, कौन जाएगा। पर एक बंदा जरूर जाता था, वी यूज्ड टू वॉलंटियर कि अच्छा ये वाली क्लास मैं अटेंड कर लूंगी, वो वाली तू कर लेना, वो वाला तू कर लेना, यू नो, लाइक दैट वी वुड अटेंड क्लास, राइट। सो एंजाइटी होती ही नहीं थी क्योंकि हमने सारी क्लासेस अटेंड कर ली ना। चाहे 5 लोगों ने 5 क्लासेस अटेंड करी तो हो गई सारी क्लास अटेंड। नोट्स तो हमें सारे 5 क्लासेस के मिल गए, है ना। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू डिवाइड द वर्क ऑल्सो। Even when we studied for counseling, we had divided the work. You know, we had a group of 4-5 good friends, and we decided to help each other. अच्छा वो वाले नोट्स तू पढ़ लेना, ये वाले नोट्स मैं पढ़ लूंगी, अच्छा हम एक दूसरे को समझा देंगे क्या है इसमें। इट्स कॉल्ड टीम वर्क एंड कोऑपरेशन नाउअडेज। हमारे टाइम में तो हम कहते थे कि कुछ भी नहीं बुलाते थे, आजकल बुलाया जाता है टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, राइट। तो सबको सारी क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी दैट पढ़ाकू, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। टीचर ना मेरे को डंडा लेके मारेगी, बट इट्स द फैक्ट। कभी कभी बंक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जाके कैंटीन में मैगी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैगी इज जंक फूड बट इट्स गुड, इट्स कंफर्ट फूड। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा छोले भटूरे वाला है कमला नगर में, वो फर्स्ट लेन में पीछे है, पता करना उसके बारे में। हम बड़ा खाते थे छोले भटूरे। आई वॉज इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सो उसके बीच में से निकल के हम जाते थे और छोले भटूरे खाते थे कमला नगर में। और एक फ्रूट बियर बड़ी फेमस है कमला नगर की, जस्ट कोने की दुकान, कोने में एक दुकान है, उसमें फ्रूट बियर मिलती है, बहुत बढ़िया। टीचर्स भी नहीं आती, कई दफा टीचर्स भी बंक मारती हैं बाय द वे। कॉलेज में ऐसा होता है, स्कूल में नहीं ऐसा होता। स्कूल में तो टीचर आती ही आती थी, तो कॉलेज में टीचर भी नहीं आते कई दफा। So that's the time you can enjoy yourself. Please don't go and sit in the musty, dirty library all the time. And you guys must be having experiments and all also, na? Laboratory का भी काम होगा काफी। Yes, ma'am. Actually, we are completely occupied till 5 p.m. And that's the reason most of us are struggling to manage our time. And शायद maybe इसी वजह से anxious हो जाते होंगे बच्चे।
5 बजे तक क्लास में बैठे रहो and then फिर शाम को आओ, you take a break of 1 hour, फिर 2 घंटे मिलते हैं मुश्किल से to complete the practical file and to study, and then it's dinner time, and then बहुत जल्दी टाइम चला जाता है, पूरा दिन कैसे निकलता है कुछ समझ में So नहीं let me now make you go through a very short meditation because we've just got about 18 minutes left. I will make you go through a very short meditation which you can do yourself early in the morning. You can use any music, right? It doesn't matter. I'm going to put on some music for you people. I'm going to just take out my earphones and just tell me if you can hear the music. Okay. I'm going to put it on my phone. I'm just checking if you can hear it. And if you can hear it, then we'll do the meditation. Right? So let me just come here. And I'll send you that music also on one of these people. I'll send it to one of them. Right? If you like it, you can use the same music. So this is, I follow Isha Foundation, which is Sadhguru, and this is his music. I think he came to Miranda House also, or he came to Sri Ram, SRCC aaye honge. Right? Can you Yes, hear ma'am. it? Yes. Can you hear Yes, it? ma'am, we can hear. Okay, great. Yes, ma'am. So all of you need to, if you're wearing specs, please take off your specs and close your eyes nicely. All of you. I can't see most of you. I don't know why. Anyway, so shut your eyes and keep your palms facing upwards on your thighs. If you're sitting on a chair, you cross your right leg over your left leg. If you're sitting down, you can sit like, a lotus position. Otherwise, you can just don't touch your back and your head to any kind of wall or anything. Don't take support. Right? And close your eyes. Right? We will go through this meditation, which is really a beautiful one, in which you concentrate on your breath. So all you have to do is take off your specs, close your eyes, put your hands facing upwards, palms open on your thighs, and follow what I say. So inhale and exhale. Inhale, exhale. When you inhale, you take the breath and you say, I'm not the body. When you exhale slowly, you say, I'm not even the mind. So I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. Inhale. Slowly exhale. Inhale. Slowly exhale. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body.
I am not even the mind. Take a deep breath, and when you exhale, say from your navel, say ah. Slowly, very slowly, rub both your palms together. Rub both your palms together. Put them over your eyes. Both your palms over your eyes. Slowly, very slowly. Take your own time.
Open your eyes. Rub your palms all over your face. Vitalize your face. This is a very simple, small little, sorry, stress busting meditation. अच्छी लगी? स्ट्रेस कहीं भाग गया? I'll share this music with Swati. She can put it on your group. You can do it for as long as you want or as short as you want. Minimum 5 minutes, maximum 12 to 18 minutes. Just watching your breath. Breath is known as the Kurm Nadi. Inhalation, exhalation, inhalation, exhalation keeps on going on like an unbroken string. Inhalation, exhalation, inhalation, exhalation, inhalation, and no exhalation, poof, you're gone. So breath is something that is very vital for us. Without the breath, we don't exist. So whenever you feel stressed, whenever you feel anxious, whenever you feel depressed, all you have to do is ground yourself and focus on the breath. Even if you don't have the music, it's okay. Just say those two lines in your mind. I am not the body. I am not even the mind. Because I am not something which is away from all this. Much, much higher being than what we are aware of. Right? So do this regularly. All your heartbeat will slow down. No anxiety. Nothing will happen. You'll get a lot of clarity, focus, concentration in your studies. Everything will be wonderful. I promise. 55. I never exceed my time because I know you have a lot of things to do. I hope my talk has helped you today and your anxiety about going back to offline is reduced. It's going to be fun. That's all you need to focus on. Right? Thank you so much, Swati. And please say thank you to Alpana ma'am. I don't see her here, but please say thank you to her for calling me for this talk. I hope I was of help. Please send me a feedback of the people who attended. I love to hear feedback. Sure. Right? I hope you so enjoyed much, the ma'am, for coming. meditation. Some people can unmute themselves, right? And tell me if they enjoyed the meditation. Swati is the only one sitting out here in this whole meeting. Hi, ma'am. Enjoyed it? Ma'am, yes, ma'am. This is Isha Kriya, right? Even I practice Isha Kriya and I feel so good after Isha, doing it. and partly it's got another sound. I wasn't too sure, with the kind of network we have, I didn't want to risk putting Isha Kriya, so I have created a version of it for myself. Because मुझे लगता है ये Zoom में ना उड़ जाता है, Zoom फिर बड़ा problem होता है. Yeah, it was really, really calming, ma'am. Thank you so much for coming and talking with us. You're most welcome.
Yes, ma'am. Thank you. It was so much relaxing. Like whenever at home we have any problem, we used to talk with our mothers, and everything was just every problem just disappeared, and it just felt like that today. Thank you so much. You're welcome. Anytime. हाँ जी दमयंती जी, बहुत स्वीट सी लग रही है with your white headphones. Give us your social media handle. Yeah. हाँ, मेरा social media handle, I am at manasvi.wellbeing. I'll just type it here. You can follow me. I keep putting stuff, which is very reassuring. Right? So whenever you need, you can come on to my Insta handle. The same thing can be typed for the Facebook, right? And you can go on to that, get information regarding mental health, get information regarding careers, right? And you can also write to me there. And I can also share my number in case you want to WhatsApp. I am called Saveera Dugal Bahl. And you can always reach out to me for any kind of help. And I'm just putting my phone number down here so that you can call me up or you can send me a WhatsApp if you're at any point of time feeling depressed or anxious or anything else also. I deal with relationships. I do marriage counseling also. अभी तो नहीं खैर तुम लोगों की marriage होने वाली, but I'm just giving you the information. Yes, Damayanti, with the white headphones. Did you enjoy the meditation? Yes, I love ma'am, your it name. was nice. Good. I love your name. Do you know who was Damayanti? It's a character in the Mahabharata. Nal and Damayanti. Read about Nal and Yes, ma'am. Damayanti. They became swans, Yes, right? ma'am. Beautiful Yes, name. ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Chaitanya, since you people have put on your videos, I'm giving you an option to speak. Namrata, did you enjoy the session and the meditation? Yeah, ma'am, it's very good. And now I'm feeling much better. Than before. Good. What about you, Chaitanya? Ma'am, it was a very calming session. Good. प्रीति पिपलानी, इसने बड़े सुंदर से मोर के पंख लगा रखे. You like मोर पंख? She came on fleetingly and then disappeared. What is this thing about not putting on your videos? I've never understood. Anyway. So I really enjoyed myself and I really felt good to interact. I always feel good to interact with young people. Not that I am very old, but I like interacting with younger people. Let me put it that way. Thank you so much for taking out the time to be with me, to enjoy yourself. And my mantra in life is always keep learning. I'm a lifelong learner. I believe you must keep learning from wherever you get the knowledge. It doesn't matter. छोटे से बच्चे से मिले या बड़े बूढ़े से मिले. Source of knowledge does not matter. It's important to keep on learning. So Komal is saying, I enjoyed it too much. It's very helpful with a big heart. So big heart to all of you. Bye-bye. Bye-bye.